text 15 for today. Yunjan ivam sadatmanam yoginiyata manasa shantim nirvana paramam matsamstam adhigachyati. Yunjan ivam sadatmanam yoginiyata manasa Santim nirvana paramam matsamstam adhigachyati. Yunjan ivam sadatmanam yogi niyata manasa santim nirvana paramam matsamstam adhigachyati. Yes, please recite the shloka. Who are the devotees are there? Please go ahead and read the shlokas. श्लोका पढ़िए. हरे कृष्णा. युञ्जन् इवं सदत्मानं योगिनियता मानसा शान्तिं निर्वाणपरामं मत्सं संस्थाम् अधिगच्छति. Okay, next. युञ्जन् एवं सदात्मतं योगी नित्यमानसा सन्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थम् अधिगच्छति. Okay, next. युञ्जन् एवं सदात्मनं योगी नियन्ति मानसा सत्तिं निर्वाणा परं मत्समस्त अगच्छति. Okay, next. Yes, Bhavika, go ahead. युञ्जम् एवं सदात्मनं योगी नित्यमनसः सन्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति. Okay, iPhone, आपका नाम नहीं पता मुझे. Can you please read the shloka? आप श्लोका पढ़ोगे? Yes. Okay, nothing. Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Thus, practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attained to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. Now, अब ये क्या बोला है यहाँ पे? By constant practice of controlling the body, mind, and activities. ठीक है? The mystic transcendentalist, that is a mystic yogi, his mind is regulated. In that sense, when he constantly try to control his body, mind, and activities, with the regulated mind, he become eligible to go back to Godhead by the cessation of all material existence. Okay? This is how they practice. Let us go to the purport for more understanding, then I'll explain. The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. See, this statement is very important. क्या बोला है? Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. कि जो भी हम योगा करते हैं वो किसी भौतिक इच्छा या फैसिलिटी के लिए नहीं होता है. योगा का मतलब होता है अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना या मटेरियल एग्जिस्टेंस को खत्म करना. व्हाट इज द मटेरियल एग्जिस्टेंस? दैट आई एम दिस बॉडी. ठीक है? Our true identity is I am the spirit soul, I am part and parcel of Krishna. So cessation of material existence means cutting down our false ego that I am this body. ठीक है? And engaging in the supreme occupation, that is being a servant in the service of Lord. That is what it mean by yoga practice. ठीक है? Like there are mystic yogis, what they do, they perform yoga meditation to attain some mystic power. But the mystic power is material thing, na? Like there was in a story, I think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has told, कि once there was a young boy, he wanted to acquire a mystic power. He like I think we are all in our childhood be very fanatic, we live in our fantasy that I will be having some power and all. So like that there was a young boy in a village. It's a very small village. तो वहां पे एक लड़का था. तो उसने क्या किया? He joined the yogis in the Himalayas. He went there, he performed severe austerity for many years, and after when he grown up quite young, he returned back to his village and everybody get together. सब लोग इकट्ठे हो गए उसके पास में. अच्छा, आप तो योगा सीखने गए थे, कुछ मिस्टिक पावर लेने. What is your power? Show us. Everybody was asking, and he says, I can cross the river by just walking. कि मैं
नदी पे चल के नदी को क्रॉस कर सकता हूँ और मैं डूबूंगा नहीं. आई कैन मेक माई बॉडी सो, इतना मैं अपने शरीर को हल्का कर सकता हूँ कि मैं नदी पे चल सकता हूँ. ठीक है. तो एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था उस गांव का. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ही सेड, दिस इज योर मिस्टिक पावर. दिस इज लाइक 2 पैसा पावर. Hare Krishna Arti Madhuri. This is like 2 paisa power. That Mr. Yogi, who's a young boy who now like grown up, he said, how it is 2 paisa? He said, नदी क्रॉस करने के लिए इतना तपस्या क्या, इधर नाव वाले को 2 पैसा दो ना, आसानी से क्रॉस कर सकते हो. So the point is this mystic power is actually the 2 paisa thing only. It's very cheap because the mystic power you acquire, you will remain in this material world only, isn't it? Is it going to help you to go to Goloka? No. Is it? It will help you to cut off the cycle of birth, death, old age, and disease? No, isn't it? So one should not, and one has done lot of austerities. One has performed so many years he has spent and performing, and the yoga practice, it's not that easy. This yoga practices are easy? No. Yesterday we said कि one has to sit straight, body, neck, and like erect in one position, और नाक की point पे आपको meditate करना है. Then meditate on Krishna in your heart, and like that way it's very difficult. Sitting on kushagrass, going to secluded place, it's not that easy yoga. And performing so much austerity, one has to follow celibacy, as we yesterday talked about celibacy. It's not that easy for the Kali Yuga. It's to follow the celibacy and the regulative principles. इतना अपनी इंद्रियों को control करना इतना आसान नहीं है. और किसके लिए? Some mystic power to acquire? No, that is not going to help you. So, or maybe there are other yoga practices also, like the Mayavadis. They meditate on Brahman. They meditate on Brahman to merge with him to become God. But what happened after that? They again fall back to the material world. वो भी भौतिक जगत से परे नहीं उठ पाते हैं. ठीक है. So the ultimate goal of yoga practice is to cessation of all material existence. It is not just to attain any kind of material facility. No. The yoga means yoke. Yoke means to link with the supreme person. That is the real essence of yoga. ठीक है. आगे क्या लिखा है? One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogi according to Bhagavad Gita. See, अब आप लोगों का misconception clear हुआ. In our India, we celebrate Yoga Day. Yoga Day celebrate करते हैं ना? Yoga means people says yoga किया करो, सेहत अच्छी रहेगी, पेट अंदर जाएगा, you will remain fit and fine, you can breathe nicely, your skin will glow, you should do yoga every day. But that is on improving our health, body condition. But यहाँ पे क्या लिखा है? One who seeks an improvement in health or aspire after material perfection is no yogi according to Bhagavad Gita. तो वो योगा आपका योगा एक्चुअल में नहीं होता है, and neither you will be considered as yogi. Yogi means who is after the supreme person to establish his relation with the supreme person. Okay, that is actually the yoga. And who is the topmost yogi? Bhakti yogis, those who are performing devotional service. That way, that is the easier way one can establish his relation with the supreme. Okay. Next he said, nor does cessation of material existence entail one entering into the void, which is only a myth. कि अब जैसे मायावादी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या. ठीक है, जो ब्रह्मन है वो सत्य है, बाकी जो जगत है, भगवान का एनर्जी है, वो सब झूठ है, इल्यूजन है. तो इसीलिए वो कोई भी जैसे वस्तु है, अब जैसे ये मोबाइल और लैपटॉप वी आर यूजिंग और द इंटरनेट वी आर यूजिंग, जैसे oh it's Maya, don't get entangled with Maya, so they don't into the actions. But bhakti yogis, like we are using this laptop, I'm taking class, using the internet, we are having this mobile, we have the WhatsApp group, we share the content on spiritual things and all. So we are using YouTube, we are using Facebook, Insta to preach about Krishna consciousness, है ना? So like that we came in contact with the devotees, we share the things. But these people says कि जो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड में जगत में जो भी चीज है वो झूठ है, मिथ है, इल्यूजन है. मगर एनर्जी और एनर्जेटिक किसी की, जैसे भगवान है एनर्जेटिक है, तो क्या उनकी एनर्जी झूठी हो सकती है? नहीं. अब सूर्य है ना, सन है, तो क्या उनकी सनलाइट झूठ है? नहीं. वो उनकी एनर्जी है तो वो झूठ तो नहीं है ना. It's true, sun rays are true. So Mayavadi is having that thing. So that is totally nonsense thing. And it says there is no void anywhere within the creation of the Lord. So what they say is कि we have to, they are into voidism. ठीक है, कई लोग हैं निर्विशेष शून्यवादी. शून्यवादी पढ़ते हैं ना हम लोग, zero, voidism. There is nothing like void. जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी है, merge into nirvana. Nirvana means nothingness. Just merge into nothingness. But what is nothingness? तो नथिंगनेस में मर्ज होके क्या मिलेगा? नथिंग.
so we need not to go into wordism. ठीक है? The cessation of material existence enable one to enter into a spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon or electricity. ठीक है? तो material existence का cessation मतलब that is the only thing that will help us to enter into गोलोका. मतलब कि अपनी इंद्र तृप्ति छोड़ के leave behind sense gratification, leave behind Maya, then only you become eligible to go into गोलोका. ठीक है? और भगवान के धाम की डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में दी गई है. भगवान ना सूर्य हो, ना शशांक, न पावक. इसे कि भगवान के धाम में, अब जैसे ये रूम में आई एम सिटिंग, so I have electricity here, there is a bulb is there in front of me, so because of that light I am able to, you are all people able to see me. ठीक है? और लाइट की वजह से. मगर भगवान के धाम में ना तो सूर्य, अब जैसे हमारी पृथ्वी में अगर सूर्य नहीं आएगा तो you want, it's like dark for us, we won't able to see anything outside, isn't it? Without sunlight our eyes are like nothing, we cannot see anything, है ना? अगर सूर्य के लिए, सॉरी, फॉर द कृष्णा's abode, वहां पे ना तो सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की, और ना तो इलेक्ट्रिसिटी की. इट डजंट रिक्वायर, भगवान के धाम में लाइट के लिए सूर्य चंद्रमा का जरूरत नहीं है. इट जस्ट ओनली बाय लॉर्ड्स एफल्जेंस द धाम इज वेरी मच illuminated. Like in the Gopi Geet it says कि gopis complain, कहते हैं कि भगवान इतना, यशोदा माई को कंप्लेन करती हैं, कहते हैं कि आप भगवान को इतने सारे ये ज्वेल्स पहना देते हो कि इसका प्रकाश इतना ज्यादा कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते. कि ये जो आपने ये ज्वेलरी उनको पहनाया भगवान को, यशोदा माई तैयार करती थी ना भगवान कृष्ण को, तो कहते हैं आप इतने गहने पहना देते हो, उनका इतना चमक होता है कि उनकी ग्लिटरिंग इतनी ज्यादा, वी वॉन्ट एबल टू सी कृष्णा क्लियरली, आप उनको इतने गहने मत पहनाया करो. Actually, it's not the jewelry that is glittering, it's because of Lord's body effulgence that jewelry is effulging. Means कि भगवान के शरीर के तेज की वजह से वो जो गहना भगवान पहनते हैं वो चमकता है. It's not कि वो जो गहना है वो खुद से चमकता है, नहीं, क्योंकि भगवान की बॉडी की वजह से वो गहना चमकता है. तो similarly for the Lord abode, it doesn't require any sun, moon or electricity. It's only by the Lord's, भगवान की शरीर का ही इतना तेज है कि इसके सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है भगवान के धाम में. All the planet in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material sky. ठीक है? अब जैसे सूर्य है, उसके खुद का प्रकाश है ना, वो अगर चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेता है, उसी प्रकार से जो भगवान का धाम है वो self-illuminated है. It doesn't require any sun, moon. Okay? The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planet thereof are called Paramdhama or superior abode. इसमें इसका मतलब ये है कि सारी सृष्टि भगवान की है ना. In 529 we study Bhoktanam Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Who is the Maheshwara? That the supreme person who is the controller of whole world is Krishna. ठीक है? Everything belongs to Krishna. मगर जो भगवान का खुद का personal residence है, that is Goloka, that is called Paramdhama, superior. ठीक है? Paramdhama means above all the dhamas, that is Paramdhama. So भगवान के abode को क्या कहा जाता है? Paramdham. ठीक है? A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, as clearly stated herein by the Lord himself, mat chitta mat prana mat sthanam, can attain real peace and ultimate reach his supreme abode Krishna Loka, known as Goloka Vrindavan. तो भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में. ठीक है? ब्रह्म संहिता में गोलोका एव निवसति अखिलतम भूता कि 537 में ये श्लोक आता है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता, कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनका जो धाम है that is अखिलात्म भूता, that is गोलोका ही stays. ठीक है? What is the address of Lord? Goloka Vrindavan. Okay, so there where Krishna resides or Krishna live, and one who understands Krishna can actually attain real peace and can ultimately enter into Goloka. कि जो भगवान को जान पाता है, जैसे कृष्ण कहते हैं जन्म कर्मा चामे देव्यम, means one who understand my appearance and disappearance, मतलब one who can understand Krishna can never Krishna, sorry, so that person can never return back to this material world. जो भगवान को जान लेता है. ठीक है? So to understand Krishna, the only means is devotional service. Okay, again the devotional service comes, as in morning class also we studied. So where is the Lord abode? That is Goloka in the spiritual world. ठीक है? ये जो material world है, it's a reflection of the spiritual world. ये क्या है? भौतिक जगत का perverted reflection है ये. जैसे एक पेड़ है, नदी में उसका परछाई होता है ना, so वो परछाई उल्टी होती है पेड़ का, it's like reverse.
रिवर्स में होती है। तो जो परछाई है दैट इज मटेरियल वर्ल्ड, बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अबव ऑल। तो ये भौतिक जगत जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो एंड वी ऑल बिलोंग टू दैट गोलोका, ठीक है। अगर इफ यू डोंट बिलीव दैट यू बिलोंग टू गोलोका, आई कैन गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट मी आस्क यू, ये शरीर खत्म होता है, डज दिस बॉडी पेरिशेस, यस और नो? डज दिस बॉडी पेरिशेस, ये शरीर खत्म होता है? यस, यस माता जी। होता है ना? यस ओके, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भी खत्म Yes. होगा, होगा? यस माता जी। होगा ना? तो ये और क्या Yes, चीज है जो माता खत्म नहीं होती है? सोल यस, Soul. सोल खत्म नहीं होती है ना? सोल नेवर एंड्स। अब सोल खत्म नहीं होती है तो इसका मतलब सोल यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती, isn't it? It belong to certain place जो खत्म नहीं yes होता yes है। yes लॉजिक समझ में आया? अंडरस्टूड? yeah कि मतलब ये शरीर खत्म होता है, दिस बॉडी विल perish, दिस मटेरियल वर्ल्ड विल perish one time, but the only thing that doesn't perish is stated in the Bhagavad Gita 2.22, one can study. जो आत्मा है शरीर के अंदर, द सोल, इट नेवर फिनिश, नेवर perishes. So that means this soul doesn't belong to neither to this body, neither to this material world. It belong to some place that never ends. And what is that place? That place is Goloka Vrindavan. Actually, we are residents of that place. But because of our enviousness from the Lord, we are ended up here in the material world. And we are suffering now and acquired this material body. You know, भौतिक जगत में रहना है तो भौतिक शरीर होना चाहिए ना, क्योंकि भौतिक जगत का नेचर टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी शरीर ही आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड दिस बॉडी, बट द सोल इज इटर्नल, इट नेवर डाइज। तो इसलिए गोलोक में सब कुछ परमानेंट है, तो वहां तो सोल भी परमानेंट है, तो वो वहीं से बिलोंग करती है। सो वी हैव टू गो टू अ रियल होम ना। नाउ वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो दैट रियल होम इज गोलोक वृंदावन। ओके, सो वी हैव टू गो टू दैट प्लेस। So it says, yeah, the Lord, although residing always in his abode Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma as well by dint of his superior spiritual energy. कहते हैं कि भगवान तो गोलोक में रहते हैं, मगर by his own potency he is everywhere. As says Krishna is everywhere, even in the atom. He is everywhere as a Shirodakshai Vishnu. Super soul है ना? Krishna is super soul. He is in my heart also. He is in your heart also. He is in every jiva's heart. Even in the atoms, Krishna is there. You know, even in the cell, Krishna is there. So Krishna, though he lives in Goloka, but he is pervading everywhere as a localized Paramatma. ठीक है? No one can reach the spiritual sky, Vaikuntha, or enter into the Lord's eternal abode without the proper understanding of Krishna and his plenary expansion Vishnu. So without the understanding of Lord, one cannot enter his abode. You know, like I'll give you. अब जैसे बारिश होती है तो पानी कितना प्योर होता है ना, यू कैन ड्रिंक डायरेक्टली, isn't it? But when it come in contact with the mud, it become dirty. अब वो गंदा पानी आप पी पाओगे? No. You need to purify that water, you know. Do you need a Kantar or whatever the purifier you're using at your home? So you need a purifier if you want to drink that water that is in contact with the mud. वो गंदा पानी लेके आओगे तो आप purifier में डालोगे. In purifier there is a process that water has to go through many layers and then it get purified, then you can drink. So similarly, we are pure by nature. The soul is very pure. But the thing is, the moment we come in contact with this prakriti, the material nature, we become dirty, because this deha, the body we are carrying, it's material matter, you know. So we are now conditioned. Condition matlab there is a conditions, you know. Condition matlab condition. The soul cannot live in this body for whole time. There is a time period for this body. There is an expiry date for this body. So there is a condition, you know. And soul is by nature is eternal, blissful, full of knowledge. But being in conditioned body, it can never remain happy for all the time, you know. So like that way. So there is conditions in this material world. So now if we again, if we have to go back to our pure state, so we need a purification, isn't it? We need a purification. And what is the purificatory process? Chanting of the holy names, Hare Krishna Mahamantra, that we, the Bhakti yogis, practice chanting this Mahamantra. What is the Mahamantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By chanting these holy names every day and practicing certain rules and regulations, we get purified, and then we are able to understand Krishna as it is.
and then we become eligible to go back to home, back to Godhead. So there is a process, isn't it? So there is a process for it, so that we need to follow if we really wanted to go back to our real home, you know. और वापस जाने के लिए जो चाबी है वो मनुष्य जीवन ही है. It says the human form of life is a key in your hand to unlock the door to go back to home, back to Godhead. You know, तो ये जो शरीर है मनुष्य जीवन का, किसी और जानवर के अगर आप शरीर में हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते हो. But you are into the human form, you can inquire, you can practice this process. So this vehicle is given to you. So take full advantage of this and use this key perfectly by practicing this bhakti yoga. Then you can become eligible to go home, back to Godhead. Okay. So therefore a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi. Understood? इसलिए जो person कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो perfect yogi है, because his mind is always absorbed in Krishna's activity. Save mana Krishna padar vindayo, because his mind is always absorbed in activities of Krishna. In the Vedas also, Sheta Shetnana Upanishad 3.8, we learn tam eva vidivati mrityum iti. One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. क्या लिखा है? One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Those who are new, they might not be able to understand कि why it says path of birth and death. अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो according to your karma, the karma you create, either good or bad, you are acquiring a certain body. ठीक है, आपको एक शरीर मिलता है आपके कर्मों के अनुसार. If you have done the good deeds, good karma, you might be elevated to heavenly planets. Okay, or you might get a very good body that is very beautiful, handsome. You are having a very rich and very intelligent. Like that, according to your karma, you get a body. And one who has done the bad karmas, they might get a body of a deficiency होगा, या handicap होगा, या काले हो, सुंदर नहीं हो, ugly हो. So accordingly, you get a body. ठीक है? As long as there is a chakra of karma, you will be getting into another body, another body, another body, another body. According to your karma, you might get a body of a animal, and you might get a body of a human, or you might get a body of a demigod, according to your karma. But till this karma cycle is not cut it off, you will remain entangled in this material world and will be taking birth again and again. Again, puna puna, पुनरपि जनना पुनरपि मरना. As शंकराचार्य says कि बार बार आपको जन्म होता रहेगा, बार बार मृत्यु होती रहेगी जब तक आप ये कार्मिक साइकिल नहीं छोड़ोगे. ठीक है? और ये कार्मिक साइकिल कैसे खत्म होता है? When you engage in Krishna consciousness, because in Krishna consciousness we are acting karma free. Because the food we eat, that is also karma free diet. Because जो हम खाना खाते हैं, we first offer it to Lord, that is a bhoga. And when we take out from the bhog, जब हम भगवान को भोग लगा के उठाते हैं, that becomes prasadam. It's a transcendental food. It is beyond the karmas. There is no karma. That is karma free diet. You know. So every activity we do, if we offer the result to Krishna, that is karma free. There is no karma. So जो कृष्ण भावनिक व्यक्ति है वो पूर्णतः भगवान पे मेडिटेट करते हुए सारा कार्य करता है. So there is no karma, and that's how he is karma free. So there is no birth again in the material world. That's how you cut it out, this loop of birth and death, and can go to your real home, Goloka. Otherwise, you will remain in this loop of birth and death again and again, either into animal species or the human species. That's up to your karmas. Okay, so don't create further karmas. Okay. In the other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence, and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. So the perfection of yoga system is attainment of freedom from material existence. Freedom from material existence means freedom from the three modes of material nature. Don't remain under the modes, but be on the transcendental platform, fully engaged in the service of Lord. So that is real independence, or freedom from material existence. One more thing is there: free from modes and free from the cycle of birth, death, old age, and disease. Then actually you are performing the real yoga. Otherwise, the yoga for the body and all, this is not the real yogas. Okay. The real yoga that will help you to cut this cycle of material existence, the birth, death, old age, and disease, so that you can go back to Godhead. That is real yoga. Okay. And the yoga is not something word jugglery or gymnastic. आप कुछ gymnastic दिखा रहे हो. No, that is not exact yoga. Okay. So we are having a few minutes. So I will stop here. Would like to take up some questions from all of you, or maybe some understanding or realizations. So yes, please go ahead. Who would like to speak up first? Anyone can speak.
यस, कौन बोलना चाहेगा? और किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, सो दे कैन ऑल्सो आस्क और इंक्वायर. So yes, who will be the first person to speak today? As in the morning class also I said, don't let me to take your name. You at your own self, please unmute yourself and speak something. Yes, without wasting any moment, please go ahead. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. Who is the first person? Yes, Asta. Yes. Mataji, as you are saying, no, there is one by chanting Hare Krishna Mahamantra, we can cross this cycle Yes. of birth and death race. So just एक little जो अभी या जो मतलब जो भूमिका भाविका माता जी ने जो मुझे ऑडियो भेजा था उसी का एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, लाइक यू नो. Yes. फॉर यू गाइस देवर लाइक ऐसे बोला जाता है ना कि कलयुग इज सो मतलब पॉल्यूटेड है, यहाँ पे भक्ति करना इज सो हार्ड. तो वही श्लोक वहाँ पे भी वही श्लोक माता जी ने भी भेजा था मुझे. तो वो श्लोक में बता रहे थे कि लाइक आपको सतयुग में बहुत तपस्या करनी है, फिर द्वापर एंड फिर उसमें अलग अलग Yes, Satya Yuga there is meditation process, Treta Yuga there are sacrifices, Dwapar Yuga there are temple worship or deity worship, and the Kali Yuga Hare Nameva Kevalam. Yes, and for the Kali Yuga is only Harinam. Just by chanting Krishna's name we can deliver. So this point I feel like I need to add. Yeah, thank you, Mataji. In the Kali Yuga, the only way to get out of the cycle of birth and death and for your deliverance from this material existence is Hare Nameva Kevalam. As we studied in the, I think in the previous verses also we studied, it is mentioned in Kali Sanatra Upanishad, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nameva Kevalam, Evanasti, Evanasti, Evanasti Gatir Anyatha. Until you come to this, or ek hi yagya hai, that is Sankirtan Yagya, recommended for the Kali Yuga, because they are very troublesome, misguided, lazysome. So for them, the only way to get out of this material existence, or it says house is on fire. So if you won't get out of this fire, Sansara Davanal, so the only way is to chant the holy names. So chant these holy names with full faith and concentration. Okay. Yes. Thank you, Asta Mataji. Yes. Anyone else? Next. Yes. Next. Who is there to speak up something? हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna Mataji. माता जी मुझे वो जो 10 ऑफेंसेस होते हैं ना, 10 ऑफेंसेस जो नामा अपराध होते हैं, उसमें जो सेकंड वाला नामा अपराध है ना वो समझना था. ओके जैसे अभी हमने बात की चैंटिंग की, वी हैव टू चैंट द होली नेम्स. उसको चैंट करने का भी एक प्रोसेस है. देयर आर 10 ऑफेंसेस, नामा अपराध जिनको कहा जाता है. तो उसके बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो समटाइम. पर जो नाम अपराध है उसमें एक जो ये माता जी कह रहे हैं उनको दूसरा नामा अपराध पढ़ना है कि जब करते हैं तो हमें उन 10 ऑफेंसेस का ध्यान रखना है कि हम वो अपराध ना करें जब करते हुए. तो दूसरा नामा अपराध है, उसमें ये बोला गया है कि डोंट कंसीडर लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा और द डेमीगॉड्स इक्वल टू लॉर्ड विष्णु और इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, कि उसमें ब्रह्मा, शिव जी आदि जो देवगण हैं उनको ब्रह्मा भगवान विष्णु के इक्वल बराबर नहीं समझना है और ना ही उनसे इंडिपेंडेंट समझना है. इसका मतलब ये है जो सुप्रीम पर्सन है वो भगवान कृष्ण है, जो देवगण है वो उनके सबॉर्डिनेट है, मतलब उनके अंडर रह के कार्य करते हैं. ठीक है, और इंडिपेंडेंट मतलब उनकी खुद की कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है. दे हैव कम फ्रॉम कृष्णा ओनली. अब जैसे ब्रह्मा जी हैं वो भगवान विष्णु के नेवल से आए हैं. फ्रॉम नेवल देयर इज अ लोटस केम and from that lotus Brahma ji came, and Brahma ji ke 4 heads se Lord Shiva came, you know, so they are interconnected. They are, the origin of them is Krishna, as Krishna says that Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadi Adir Govinda Sarva Karana Karanam, that Krishna is the cause of all causes and he is the beginning and ending of everything. Means अनादि और आदिर, भगवान का कोई अंत और वैसे तो नहीं, मीन्स ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. सो इफ द ब्रह्मा जी इज देयर, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान से ही निकल रहे हैं. ओरिजिन कौन है उनका? कृष्णा ओरिजिन है. कृष्ण सेज इन भागवतम फर्स्ट श्लोक जन्मादि यस्य यतः, दैट आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. सो लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम विष्णु. ठीक है, they are all coming from Vishnu, and they are having the different department, like Brahma ji doing the creation and Lord Shiva did the annihilation,
और ब्रह्मा जी जो क्रिएशन करते हैं उसका भी ब्लूप्रिंट कौन प्रोवाइड करता है? कृष्णा. कृष्णा इज द प्राइमरी क्रिएटर, ब्रह्मा इज द सेकेंडरी क्रिएटर. ठीक है. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस and they are not equal to Lord also, because Brahma ji is Jiva Tattva and Krishna is not any Tattva, he is Supreme Krishna Tattva, you know, he is transcendental. But this, and moreover Brahma ji and Shiva, they are the Guna avatars. Guna avatar means कि किसी मोड के इंचार्ज हैं, जैसे पैशन के इंचार्ज है ब्रह्मा जी और इग्नोरेंस के इंचार्ज हैं शिव जी. ठीक है. सो दे आर अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ कृष्णा, अंडर हिम दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्किंग और एक्टिविटीज. ओके, लाइक देयर इज अ सीईओ और नीचे ऑफिसर्स होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए. तो डिफरेंट डिफरेंट देवी गॉड्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया गया है, तो वो भगवान के बराबर नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है. ठीक है. क्लियर है कोमल माता जी? Yes, Mataji, thank you. Okay, Hare Krishna. Yes, anyone else having any questions or comments? और किसी का कोई प्रश्न है या anything one want to inquire or having some point to add up? Yes, yes, पूजा माता जी. मेरे को पूछना था ना, जैसे अभी हम लाइक बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल लाइक हमें भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है, बट अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो मैंने सुना उसका भी भोगने के लिए आना पड़ता है. माता जी, हम जो अच्छे कर्म करते हैं उसको भी तो एंजॉय करना है ना. फिर अगर आपने किसी का भला किया है, कर्मा क्या है? एक्शन रिएक्शन. कर्मा क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये हमारा थर्ड लॉ है न्यूटन का. तो वही यहाँ पे भी एक्ट करता है कि कर्मा का एक्शन जो होता है उसका एक रिएक्शन भी तो है ना. कर्मा बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा एंजॉय भी तो करना है ना. तो उसके लिए भी आपको भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा. सो पायरिटी इज नॉट अ गुड डील. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पुण्य कर्म मत करो, आप करिए मगर कृष्ण भावनामृत में करिए. Then it is transcendental activity. Don't create any karma, but act in Krishna conscious way. By being in Krishna conscious, you are doing the ultimate benefit, ultimate welfare, you know, ultimate pious activity. But अगर कृष्णा से अलग रह के कोई भी कार्य कर रहे हो तो you have to come again. तो वो enjoy करने के लिए आना पड़ेगा ना यहाँ पे. So that is there. तो माता जी जो हम कृष्णा के लिए मतलब कर रहे हैं वो हमारे कर्म में काउंट नहीं होगा? नहीं माता जी, it's not a karma, it's devotional service. Okay. मतलब वो फिर भोगने के लिए दोबारा आना है. कृष्णा it become devotional service. ओके ओके, ठीक है ना. ठीक है माता जी. ओके जी. यस, एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है और कमेंट? नथिंग? Nobody having anything now? Okay, then we will stop then. Let's chant 3 times Hare Krishna. We'll see you all tomorrow for Bhagavatam class. Tomorrow there will be no Bhagavad Gita class in the evening. As I said, I will be little busy tomorrow. What please Krishna the most? Chanting of his holy names. And when you serve his devotees, Mataji. Krishna को सबसे ज़्यादा please क्या करता है? To preach about this message to his devotees. इस हरि नाम का प्रचार करना, भक्तों की सेवा करना, मतलब गुणगान करना. That pleases Krishna most. First is to serve his devotee. Second is preaching his holy names and chanting his holy names. That pleases the Krishna most. आरती माता जी, ठीक है? Is it fine? This is what pleases Krishna most. When we preach about his glories and we bring devotees to Krishna. जब हम जो भूली भटकी जीवात्माएं हैं उनको प्रचार करके भक्ति में लगाते हैं, वो कृष्णा को सबसे प्रिय है, और उनके भक्तों की सेवा करना. So that is there. ठीक है? Okay, then let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Arjun Samad ki jai. Bhagavad Gita ki jai. All the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna.